I think it will be appropriate if I can request Honorable Minister to please give his inaugural address. And as you know, Odisha is one of the states which has been a pioneer in introducing telemedicine, and I think it's thanks to his initiative. And Dr. D.K. Rai Mahasaya, Bhagat Mahasaya, मंच उपर जो मैंने अच्छा मो ना धरिक संबोधन करी नहीं ये सौरमंडल सबू जाजल्यमान तारा मान नक्षत्र माने विशेषकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र छात्र छात्री माने एवं सबू सम्माननीय अतिथि माने एज पर द प्रैक्टिस द चीफ स्पीकर शुड स्पीक एट लास्ट बट नाउ टुडे आई हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट to break the system, the tradition, and he has acceded to my request. I am ashamed of telling that the health minister of the state is unhealthy, in an unhealthy state. But really I am not healthy now. Since last couple of months I have been suffering from numerous diseases. I was just explaining my problem to Dr. Mahapatra, who is a very popular neurosurgeon of the country. And this has been my proud privilege to attend this function, I think, consecutively for the third time. I would like to extend all my thanks to Dr. Ray and Mr. Bhagat also. And I do not know why I am all the time attracted towards this institution, this trust OTED, and in particular towards Mr. Bhagat. And the portrait you are seeing of Sai Baba, I can't say late Sai Baba, because as has been explained to me by Mr. Bhagat, who is a great devotee of Sai Baba, God never dies. Isparanकर मृत्यु हुए नहीं एवं बहु लोक विश्वर साई बाबा भितर ईश्वरंकर सत्तार संधान पाती पाउथिबे मध्य तेणु स्वर्गत साई बाबा बोली बोध कह जाए ना भगत बाबू जानी बहु लोक स्वर्गत कह जाए ना से मर शरीर चलीगला से अमर से सर्वव्यापी एवं सर्वत्र विद्यमान एवं सबुंक ठारे बोधगम्य सेपरी जड़े महापुरुष ईश्वरंकर प्रतीक बोली मु कहबी सत्य साई बाबा एवं बोधे जिते मोर मिस्टर भगत को प्रथम मोर किछि वर्ष तले साक्षात हला एंड मु जानि नथली से जने एते बड़ उद्योगी बोली करे आई हैव नो आइडिया मिस्टर भगत अबाउट योर पास्ट. And when I discussed with Mr. Bhagat about so many things, starting from the problem in the health department to many other social problems, I was too much impressed by his, what I would say, so to say, small pravachana to me as a great devotee of Sai Baba about Satya Sai Baba. Let me be very frank about it that I was never a devotee of Satya Sai Baba, though many of my family members were, including my late mother. एवं आज भी अनेक कथारे मोर मो टिके एडजस्ट करि पारे नहीं सहमति होई नहीं बोधे को गोटे सभा ई सभा कही जे हु इज ए गॉड ईश्वर किए मो मतरे गोटे मनीष मुझे गोटे दुखी मनीष मो दुखरे जे छेड़ा से मो ईश्वर मुझे गोटे तृषार्थ मनीष से तृषा को दूर करने मत जिते जड़े मुंदाए जल देला से मो ईश्वर मुझे जो भोकर मरुची सड़ुची अनाहार मरुची मो पेट को खंडे जे दाना देला से मो गोटे ईश्वर तेणु जे जो शक्ति मते जीवन देला जो शक्ति मते बंचाई पारेला जो शक्ति जीवन्यास कला जो शक्ति मो विपद मो आगे उभा है सी मो ईश्वर से बोधे विश्वर शत सहस्र मनीष सत्य साई बाबा भितर ईश्वरंकर संधान पाई आपण जो मैंने मते भगत बाबू अनेक समय कहती चलतु जीवा ना पश्चाताप करेंगे बाबा
समय भितर मुझे जापारि ना मुझे आज भगत बाबू सहित कथा होती केबे जीवा बोलिकी एवं से जो मैंने आप जाइए देखिथे जो मैंने जानी समग्र मानवता मनीष जाति से धर्म से भाषा से धनी से निर्धन सबुरी मनीष आवश्यक करुवा मनीष केवल भौतिक वस्तु नुहे केवल हॉस्पिटल तैयारी करे नुहे बा गाँ को पानीय जल तैयारी करे नुहे आध्यात्मिकतार जो शून्य स्थान मनीष भितर जमिति तुषार्त को जल भोकिला को अन्न से ही परी शून्य आत्मार जो मैंने बोलुंट विवेक थाई मध्य जो मैंने विवेकहीन भाव में कार्य करुँच विश्वर महान शक्ति थाई मध्य ताकू जो मैंने उपलब्धि करि पारुना आम भलिया मनीष माने पथ थाई मध्य जो मैंने पथहरा होती से पथहरा मान को पथ देखा से लक्ष्यच्युत मनीष मान को एक निर्दिष्ट लक्ष्य पथरे घूरबार आशीर्वाद जे दौले से बोधे ईश्वर लक्ष लक्ष मनीष आगे मुझे कथा श्रीयुक्त भगत एवं सत्य साई बाबा अनेक भक्तों मोहर शुणी अनुप्राणित होती मुझे दैट इज द ब्रीज वाई आई हैव बीन ऑल द टाइम अट्रैक्टेड टू अटेंड द फंक्शंस ऑफ ओटेट एंड इन पर्टिकुलर मिस्टर भगत आई थिंक दैट इज द स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन बिहाइंड ए पर्सन मु अनेक समय कहे जो पॉलिटिकल लीडरशिप सत्य साई बाबा मु तो कवि सत्य साई बाबा आमर समकालीन समाजर सबु दृष्टि नेतृत्व दौले केवल 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 स्पिरिचुअलिज्म दृष्टि नुहे अनेक अनेक सबु दिगरु एवं समाजर विभिन्न स्तर रे नेतृत्व सृष्टि करिवार जो प्रेरणा आजिकल नेता माने व्हाट डज ए लीडर मीन because I am a leader, I am a political leader or a political worker, the common impression about a politician or the common man is one who fight election, one who gets elected, becomes an MLA or a chairman or a minister or a member of parliament or a central minister or a prime minister or a chief minister, he is a leader. Or the common impression nowadays is who all the time indulges himself in all filthy work in the society is also a leader. But दुर्भाग्यजनक वातावरण समाज रे सृष्टि होउची मु जो मान को देखुचे मंच पर द गैलेक्सी ऑफ पर्सन्स हियर दे आर ऑल लीडर इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड एवं जो माने आपण माने बसी छंती मोस्ट ऑफ यू बिलोंग समाज रो सही स्तर रे आपण माने कार्य करूछंती जोटी को मनीषर नर्क जंतणु आप उद्धार कर यू आर ऑल लीडर्स इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड जो रिनाउंड लोक मैंने कहा ना धरवे आप समस्त को जानती मु भी कम बेसी उणा अधिके समस्त को तो जानी नहीं बहु ज्योतिष्क मान को मु जानी तांकरी क्षेत्र में से माने केवल ओडिशा रे नुहे सर्वभारतीय क्षेत्र में एवं देश बाहर मध्य दे आर टेकिंग लीडरशिप मेडिकल साइंस क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में तो they are leader in their respective field. I am a leader in politics. जन किए शिक्षाविद अच्छी he is a leader there. जो समाज को शिक्षा देकर दिग्दर्शन दौरान a philosopher Radhakrishnan was a leader but he never fought election. Sarvapalli Radhakrishnan never fought election but he was a leader. गोटे विशिष्ट दार्शनिक पृथ्वीर he was a leader in his own field. तेणु आम समस्ते निज निज क्षेत्र में निज निजर चॉइस निजर इच्छा एवं ईश्वर निर्देश अनुसार आम निज निज क्षेत्र में आम नेतृत्व दौचु एवं अनेक समय मुझे जेहेतु आज भगत जड़े सत्य साई भक्त आपण मान भर आम मान भर अनेक सत्य साई भक्त जे आम निज निज क्षेत्र में जो मैंने नेतृत्व नौचु से नेतृत्व ना क्षेत्र में जब आंतरिकता ना जदि इनवॉल्वमेंट नाई जदि डेडिकेशन नाई केवल सुपरफिशियल दिखावा केवल ताहले आमे तो निज नेतृत्व न विफल होगा आमे जो क्षेत्र नेतृत्व नौ दाबी कहूँ से क्षेत्र को मध्य आमे विफलता आगू नहीं जावा आमे वी कैनॉट लीड टुवर्ड्स सक्सेस बट विल डायरेक्ट टुवर्ड्स फेलियर तो से जो माने समाज विगवत्ता जो माने समाज पंडित आज आज मु आलोचना करते डॉक्टर महापात्र सहित मु सब बेले अभियोग करे एज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बड़ बड़ कथा डाक्तर माने कहउचंती मु जहाँ को कोरापुट कलाहांडी पोस्टिंग करूची नन ऑफ देम आर इंटरेस्टेड टू गो
None कहले तो भूल हबो. More than 80% of the doctors, I'm sorry to say, are not interested to go to work in those areas which are the most neglected area of the state and of the country. Rather, I would admit, in some places there is no communication as yet after 63, 64 years of independence. In some villages there is no pure drinking water to drink. In some places there is no telecommunication, not even a mobile works. Forget about the landline phone. In some places there are schools but no teacher. In a few places teachers are posted without a school. Paper पढ़ुते आपण माने. School नहीं master दरमा नौचंती. बहुत जगह school अच्छी master नांती. So there are certain places because we are reeling under so much of poverty even after 64 years of independence. So all the time I used to complain that why doctors will not go there. They are also a government employee. But at the same time we have to also to realize that it is the constitutional responsibility of a popular government, elected government, to provide all these minimum facilities in every part of the state or of the country. So अनेक समय रे मुई अभियोग कला बेरे before coming to this function, मोर सेते 20 minute late हे गला. I got a call from my health secretary. We have developed a practice that every day I got tidbit information from my secretary about what has happened during the days. एवं से मत कहूले जे मु कहली डाक्तर जाउछंती तो डाक्तर अछंती तो many villages are now also it is Meru. And usually in many of the primary health center we post doctor, but doctor don't join, they go on leave. Even in some places they don't join without taking proper leave. So more monore the health minister Sovol Sanka, because I am afraid of after the water recedes I am going to face more problem than what the government is facing now. Because all waterborne diseases will come out. Jada, Banti, cholera, Hoija, malaria. Tapare sapo sabu baharibe. Sapa kamuda. To sabu jagare osodo achi ki nahi, doctor achanti. It is my basic concern. So I was asking my health secretary, jo jagare heiji, Banki area re, apan kara, bahut jagare, but the doctors are there or not. Even day before yesterday, I passed an order that my dear PG students are on strike for 20 days, all of you know. More to ekdam AC room re jhala bahari podudala. Because आजकल whatever happens, ultimately the politician is held responsible. Mantri istafa diyo. This has been a common thing nowadays. रास्ता दुर्घटना ले ट्रांसपोर्ट मंत्री इस्तीफा दियो, झाड़ा बनती है स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दियो, आओ कौन है लाओ की इस्तीफा दियो. अजीब इस्तीफा इज द ओनली सॉल्यूशन. तो मुझे ऑर्डर कली जे आप 2-3 मिनट सारे दोची जे पीजी स्टूडेंट्स तंकर स्ट्राइक कला परे and many of the PG students came forward with much bravery. कहले सर कौन भावु चंदे आपण हमको आमे आपण को बनने रे सहाय्य करू ना. Send us to the flood area and you'll see how we are working there. We young doctors आपण खाली दमन करिवाडा जानंती. आमे कोन काम करू ना पठांतो हमको. तो I got very happy and surprised at the same time. So I was asking my secretary this evening, have you posted those PG students after they called up the strike? I have posted 80 PG students to the flood area. To some places the PG students have gone. कारण मोरालिटी कथा एवं ड्यूटी कन्सियसनेस कथा समाज रे आम विभिन्न क्षेत्र में जो नेतृत्व नौचु आमर कथा आम आज करूँ. As we the politicians are faulting in many ways, likewise many people in the society are faulting, trying to respect their responsibility and duties. And I was reported this evening that out of the 70 or 80 PG students we have deputed, in many places they have gone, but in one place this morning's news is they went there. When they were asked to sit on a boat and go, they bluntly refused. They say, "I am pack kuruchu, we are packed to our home or our respective hospitals." So mate dukha lagila mo bole ete bravery re katha samane कहउतले ete mate principal पढ़उतले. But in many places the PG students are also very sincerely working, and at the same time जो डॉक्टर को मु काम करू नहीं बोली कहउतली,
I was surprised and I was the happiest person to know this evening. जैसे खरस्रोता पानी भितरे मोटरबोट नहीं करी 68 वर्ष किसी डाक्तर जो माने कि आसंता काली रिटायर्ड करेंगे 6 मास पर रिटायर्ड करेंगे निजर जीवन को भ्रक्षेप न करी डाक्तरी सामान धरी करी से मेरुन अंचल को 3 घंटा बोट बाहे भाई आज पहुंची चंती where even a policeman is yet to reach he पहुंची नांती but my doctor who is a 59-year-old doctor a 59-year 6-month-old doctor who is retiring after 6 months ventured to take a boat collect the all the samagris औषध इत्यादि went there 3 घंटा बोट रे बसी करी risking their own life. You see the difference. A young man just completing MBBS and doing PG refused to board a boat. कहला मुहु आज्ञा जीवी नहीं से टिकी मते पठांतु बट 60 वर्षर अर्धवृद्ध जे कि सारा जीवन डाक्तरी सेवा कला जाको मु गाली दउथले जे मिनिस्टर तबे काई काम करू ना बोली तार जीवन को विपद मणि से माने ग्रुप ऑफ 5 डॉक्टर्स who are on the verge of retirement went to the place where even a constable has not reached. This is the difference. सेही मनीष भितरे सेही पॉलिटिशियन भितरे भलो लोक अछंती खराब लोक भी बहुत अछंती सेही डाक्टर मान के भितरे वैल्यू वेस्ट डॉक्टर बहुत अछंती बहुत वैल्यू वेस्ट डॉक्टर अछंती जो माने वैल्यूज को नहीं करी प्रैक्टिस करंती डाक्तरी चिकित्सा करंती they don't compromise in the face of money or anything else. They work for the society and the poor patient. Patient is their God. सेही क्षेत्र रे आम भलिया किछि पॉलिटिशियन अछंती से माने बन्या टंका को मध्य उदरस्त करि दियंती नहीं से माने मरुडीर टंका को मध्य कंठस्थ करि दियंती से माने झड़ बात्यारे जो टंका आसे ताकू मध्य झड़ भलिया उड़ेई दियंती हुए बट सेथरे भी किछि पॉलिटिशियंस अछंती दे डू हार्ड वर्क to reach to the people and help the suffering masses. से डाक्तर के भीतर बहु डाक्तर अछंती जो मानकर सेवार अंत नाही कारण सेमान के भीतर मु इथि पे कहूची जे जो जे विश्वास करूची द सुप्रीम पावर से सब बेले से सुप्रीम पावर को भय करिवो विवेकता को दंशन करिवो विवेकता को ताड़ना देबो से मनीष पाई समाज पाई काम करिवो बिकॉज़ ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए स्पिरिचुअल पावर एटा के विश्वास करून पर आई इंडिविजुअली बिलीव दिस मे बी सत्य साई बाबा मे बी शिरडी साई बाबा मे बी विवेकानंद मे बी रामकृष्ण परमहंस whoever it may be किंतु जो मान का भीतर ईश्वर किसी सत्ता अच्छी से सत्ता बा से शक्ति को जे निज मन भीतर आग्रहण करे अनुभव करे हृदयंगम करे किछिटा साधना बल किछिटा अभ्यास बल से केबे भी पर मनीषर अपकार चिंता करि पारिबो नाही से केबे भी निज दायित्व विच्युत हबो नाही will go on doing his duty towards society, towards other, towards the suffering masses. कारण से एक ईश्वरीय सत्ता द्वारा प्रभावित बा आक्रांत तेणु से सर्वशेष मुझे केवल कहि आज जो this unique function we are not concerned about how many thousands people gather in a function. We politicians we used to address thousands and thousands people. Nobody take care of it. 2 minute खाली ताली जय 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 कर दियंती. We know it. आमे सब पुलकित ही जाओ. Doesn't matter. Maybe a small gathering. किंतु जोठी पवित्रता अच्छी जोठी गोटे गांभीर्य अच्छी जोठी we can feel that some power is guiding us, some spiritual power is guiding us. सेठी आपण अनुभव करि पारबे an eternal peace and a satisfaction. बाकी जेते काम करंतु जदि से आंतरिकता नै this is the experience or feeling of my own life. आपण छोटटे काम करिथिबे जदि आपण अनुभव कले जे you have done something for somebody you get a solace गोटे अनंत शांति मिले आपण बहुत काम करिथिबे से काम भितर जदि किछि आपनकर खुटा थिबो मु करिदेली बहुत एम्बुलेंस जोगई देली 200 एम्बुलेंस किनि करी जोगई देली 200 एम्बुलेंस रु गोटे एम्बुलेंस रे मंत्री मारि देलेनी केते 10% मते अंततगत शांति मिलिबो नाही सब बेले मन भितर अंतर भितर किछि गोटे मते कंटा मारुथबो कारण देयर इज ए पावर जे कि यूनिवर्स को परिचालित करूछंती आम समस्त को परिचालित करूछन मु ए अवसर आशा करबी माय सिंसियर डिजायर विल बी दैट आज जो प्रकार अवमूल्यन समाज रो वैल्यूज रो अवमूल्यन चली यही परिस्थिति रे एंड पर्टिकुलरली अमंग्स द यंगर जनरेशन वो तो ऑल द टाइम आई यूज्ड टू से दिस स्मॉल स्क्रीन इज गोइंग टू किल अस हमर नुआ जनरेशन को एंड इट इज ए कॉन्स्पिरेसी आप भावंतु ना इट इज एक्सीडेंटल
my major Vishwas, there is a conspiracy going on. Because India has been a power, India still is a power in the world. Even aji jetebale gote economic growth hadu ko ame jauchu. At the same time, social devaluation hoji. Gote ame economic growth hadu ko ame GDP ra katha koju, garba koruju economic growth. In spite of many people still dying under starvation. In spite of many people still living under the poverty line. And nowadays it has become our habit. State government after state government, we project our poverty more than our progress because we want to grab more money from center, from different sources, from world organizations, selling our own poverty. लज्जा तो लगे नहीं हमको एवं जितेबले यही प्रकार एक कंपटीशन किसी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होची सेतेबले सोशल डिवैल्यूएशन आड़ को हमको निया जाउची बट आई ऑलवेज बिलीव that because we are guided all the time by a superpower, India has been a nation since centuries together, since last thousands of years. India will continue to be a nation, a power for the coming thousands of years because Bharata pai gote spiritualism achi. I always cite the example about USSR. Even USSR as a country couldn't continue for a century. 1916-17 रे USSR हला even 2017 they couldn't continue. Collapsed like a task घर. Why? केवल materialistic development is not everything. Now America is materially growing. USSR grew like anything. There's competition who will reach the moon first, whether USSR or the United States of America. And that is the end. And USSR collapsed. Even couldn't last for a century. But India has been there for thousands of years. India will be there for thousands of years because India has a civilization. India has a culture of its own. India has a tradition of its own. And India has a atma of its own. Atma. India doesn't mean few land. Mati Godira Bharata nuhe. That we represent a spiritual legacy. Therefore, India is still, in spite of all odds, against all foreign attack, against all problems, India is still surviving. And let us be hopeful. Let us not be frustrated. कौन हेला देशर 65 वर्ष स्वाधीनता होगला किछि हेला नहीं हमरो मु जानि नहीं डॉक्टर बंधु माने कहबे इवन इन मेडिकल साइंस मु जानि नहीं आपण कंफर्म करे नाउ पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज़ इन इंडिया कंपैरेटिवली द ट्रीटमेंट इज मच चीपर देन व्हाट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज इफ आई एम करेक्ट हैव यू नॉट प्रोग्रेस एनीथिंग हमर डॉक्टर माने बाहर ना करू नांती हमर इंजीनियर भलो काम करू नांती तो ऑल द टाइम वी आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन अवर यंगर जनरेशन किछि हला नहीं मौका पहले 10 विदेश छाड़ी पळै जाओ नहीं एस्केपिस्ट मेंटालिटी तो बहुत समय लेनी 5 मिनट को बदल रे आई वुड अगेन आई थिंक दिस फंक्शन विल infuse a sense of responsibility amongst our students. Among the way the OTET is functioning and its institutions are functioning, I am hopeful they will show light to other section of people in the society. With these few words, I once again beg apology because I have broken the tradition. Instead of speaking last, I have taken much of time. This is the bad habit of any politician. And being a politician, I came here to speak for 5 to 10 minutes. I think I have consumed more than what I should because here, as it was told by Dr. Rai, the galaxy of personalities of this country are sitting on the dais. It is a rarest of the rare occasion we have got. So I wish I could stay in this function to the last to listen all big people here, but I will try to stay for some more time in spite of some urgent work because the health monitoring is going on in the flood area and I have been monitoring from my residence over telephone also. And Honorable Chief Minister is all the time telephoning to different ministers. Mantri mane kade soi na jao bipada samayre. So we are all alert to save the lakhs of marooned people of our state because in unprecedented flood and the second phase flood is unprecedented. You can see from this television screen and all that. I myself, in spite of belt hair, as per directed by the Chief Minister, had to go to a few of the areas and I have saw the devastation in my own eyes. It is unimaginable. Let us wish
भगवान हमको आशीर्वाद करंतु ये विपद समय आम समस्ते मिलित भाव में विशेषकर डॉक्टर फैटर्निटी जो भूमिका अच्छी से उचित भाव में ओडिशा रे तार निर्वाह करुँच ये समय आम समस्ते मिलित भाव में समग्र बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। Thank you, sir. We are very much obliged for your inspiring and encouraging words regarding OTET, and also, frankly, about the values and the ethics and the spirituality, which is the bedrock possibly of human character and of the society. I think that is what you have really reminded, that those are the most important things for anything, for the medical or whatever, the human issues, problems. In fact, sir, your sensitivity about the villages and people are not getting, and as we know, 75% of the doctors' population are in urban areas, 23% are in semi-urban areas, only 2% are in the rural areas. And these 2% attend to what you call is the 23,000 PHCs and about 3,000 CHCs. And so the village people are getting 75% of population are getting only 2% of the qualified doctors. And this is something which is a problem which has led to this telemedicine, or I think something which we possibly would be able to find solutions, and particularly for a person with your sensitivity, sir, that we have really said that there has to be very much a spiritual concern for the healthcare. Thank you, sir, for everything.